Okay, so let's move on in this chapter. Yesterday we have seen the basic formula to find the cross product of two vectors. That is what? AB sin theta n cap. Here theta is the angle between A vector and B vector, and n cap is a unit vector in the perpendicular direction of A vector and B vector, both by using the right hand thumb rule. The right hand thumb rule is useful to find the direction of resulting vector of a cross product. So what is the right hand thumb rule? Whenever we have to do cross product of two vectors, we should align fingers of right hand towards the first vector and palm along the second vector. Then we should rotate our fingers towards the palm. Then the direction of the thumb will be the direction of resulting vector. ये सब चीजें जानने के बाद में एक बहुत बारीक और एक बहुत डीप चीज आपको यहां नोटिस होनी चाहिए, और वो ये नोटिस होनी चाहिए कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर will always be perpendicular to A vector and B vector both. दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. और इसके बाद ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें कभी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए होगा, ठीक है, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, देन वी शुड डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दोस टू वेक्टर्स. So the resulting vector will be the perpendicular to given both vectors. Is it right? Okay. So first point is this: to find a vector in perpendicular direction of A vector and B vector both, we should find A vector cross B vector or B vector cross A vector. And the third point, the magnitude of A vector cross B vector will be equal to what? AB modulus of sin theta. This is the magnitude of A vector cross B vector, and this is magnitude of B vector cross A vector as well, which means these two vectors are having same magnitude but opposite direction. That's why these are the different to each other. So ये कुछ बेसिक चीजें जो हमने कल के जो भी डिस्कशन था वहां से निकाली है ना. राइट डाउन दीज फास्ट. Okay. Now let's see the another way to find the cross product of two vectors. जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट में भी दो तरीके थे, यहाँ पर भी दो तरीके होंगे.
In the second one, we will use the component form. So if a vector and b vector are given as like this, then a vector cross b vector will be equal to determinant of I cap, j cap, k cap, a1 b1 c1 a2 b2 c2. कीप रिमेंबर कि फर्स्ट रो हमेशा आई केप जे केप के केप ही बनेगी, सेकंड रो के एलिमेंट फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट होंगे और थर्ड रो के एलिमेंट सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट होंगे. ये इंटरचेंज नहीं होना चाहिए. जैसा यहां लिखा गया है वैसा ही आपको आगे भी लिखना है. इज इट राइट? है ना? तो इसी तरह से अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, देन इट विल बी इक्वल टू व्हाट, डिटरमिनेंट आई केप जे केप के केप, देन a2 b2 c2 a1 b1 c1. Okay, you can write this. Okay, so let do a question here. Find a vector cross b vector if a vector equal to minus 3 I cap plus 4 j cap plus 5 k cap and b vector equal to I cap minus 2 j cap minus k cap. I hope you know how to solve this.
सो ए सिंपल प्रोसीजर इज हियर। डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना हमें ऑलरेडी आता है चैप्टर 4 से, हमें बस सही प्लेसिंग करनी है और कैलकुलेट करना है ना। तो इस तरह से आप टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ लेट टॉक अबाउट द स्पेशल केसेस। इन स्पेशल केसेस let's talk about the first one, in which we says if theta equal to 0 degree, if theta equal to 0 degree, then a vector cross b vector will be equal to ab sine 0 degree into n cap, so that is equal to ab into 0 n cap, that is again equal to 0 vector, है ना। ओनली जीरो नहीं लिखेंगे बिकॉज जीरो इज अ स्केलर क्वांटिटी और हमें आंसर वेक्टर क्वांटिटी में देना होता है, तो जीरो वेक्टर। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट 0 डिग्री, तो आंसर कितना आया 0 वेक्टर है ना। सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मींस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन 90 degree n cap, that is equal to AB n cap. Okay. Third one, if theta equal to 180 degree means pi, so A vector cross B vector is equals to AB sine 180 degree n cap, the value of sine 180 degree is equals to 0, so AB into 0 n cap, that is equal to 0 vector. So here if we combine the things, either theta equal to 0 degree or either theta equal to pi, in both cases we got the answer as 0 vector. And you should understand that if two vectors are having angle between them as 0 degree or 180 degree, means these two vectors are parallel to each other. So with combined of these we can say if A vector is parallel to B vector, then A vector cross B vector equal to B vector cross A vector equal to 0 vector. If two vectors are parallel to each other, then their cross product will be equal to 0 vector. This statement is generated by first and third case together. Are you getting my point? Okay. The next one, fourth, if A vector equal to B vector, this should not be discussed as because already we have seen that if two vectors are parallel to each other, then the cross product will be equal to 0 vector. And if I am saying A vector equal to B vector, which means these two vectors are equal vectors and these will be parallel to each other definitely. Okay, that's why answer should be what 0 vector, but still we are discussing it to understand the things more better. So we are writing A vector cross A vector equal to 0 vector. So you should keep remember, whenever we will do cross product of any vector with same, then answer will be equal to what 0 vector. Are you getting my point? ठीक है, चलिए next. If either A vector equal to B vector equal to 0 vector, then then A vector cross B vector will be equal to what 0 vector. So whenever one of two vectors, one or either two, both vectors are 0 vector, then still their cross product will be equal to 0 vector. So ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था। हमने देखा कि जब दोनों में से कोई एक या दोनों वेक्टर 0 वेक्टर होते थे तो भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता था, और जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे तो भी 0 आंसर आता था। नॉट अ वेक्टर, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, 0 आंसर आता था। उसी तरह से यहां हमने नोटिस किया कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब भी आंसर क्या आ रहा है 0 वेक्टर, और जब दो वेक्टर एक दूसरे के या दोनों में से कोई एक या दोनों 0 वेक्टर है तो भी आंसर कितना आ रहा है 0 वेक्टर आ रहा है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने के दो चांसेस हो गए, एक या तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, या फिर दूसरा केस जब उनमें से कोई एक या फिर दोनों ही 0 वेक्टर के इक्वल है।
लेकिन अगर यहां बात ये आ जाए क्या कि if cross product of two non-zero vectors is zero vector, then it is sure that vectors are parallel to each other. Vectors are parallel to each other. Okay. जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट हमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी देता है, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट हमें कंडीशन ऑफ पैरेललिटी देता है ना। तो हमने यहां क्या कहा कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर आएगा तो हम ये श्योरली कह सकते हैं कि वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि दो वेक्टर को पैरेलल या कोलिनियर कहने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ मेथड हैं। जैसे पहला मेथड है हमारे पास में कि अगर हम वेक्टर्स को एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल दिखा दें तो भी हम उन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल कह सकते हैं। अगर हम उनके स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो भी इक्वल दिखा दें तो भी हम उन्हें पैरेलल कह सकते हैं। नाउ वी हैव द थर्ड मेथड हियर, अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिखा दें तो भी हम उन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। और इन्हीं सभी से एक बात यहाँ, एक दो बातें यहाँ बनती हैं, वो क्या क्या है, जैसे कि आई केप क्रॉस आई केप इज इक्वल्स टू जे केप क्रॉस जे केप इक्वल्स टू के केप क्रॉस के केप इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। क्योंकि अभी अभी हमने स्टडी किया किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आंसर क्या आता है, जीरो वेक्टर आता है। ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ निकल के आती है वो ये है कि आई केप क्रॉस जे केप इज ऑलवेज इक्वल टू के केप, जे केप क्रॉस के केप इक्वल टू आई केप, और के केप क्रॉस आई केप इज इक्वल्स टू जे केप। इसे अगर याद रखना है तो वी कैन मेक अ सर्कल representing these three vectors. ठीक है। आई केप का जे केप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा, के केप बनेगा। जे केप का के केप के साथ क्या बनेगा, आई केप बनेगा। और के केप का आई केप के साथ क्या बनेगा, जे केप बनेगा। ओके। अगर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, विच मीन्स इफ आई एम राइटिंग जे केप क्रॉस आई केप, द आंसर विल बी इक्वल टू minus k cap, because we know in cross product if we interchange the order of vectors then a sign of negative will be there in the result, है ना।
it done? Let's see some examples from the book. Okay, the first example in this topic is finding the magnitude of A vector cross B vector if we have given A vector and B vector in component form. So we have already done a question to find the cross product of given two vectors. If we want to find the magnitude of resulting vector, then we can find it by using the manual method of the finding the magnitude. Okay, root of A square plus B square plus C square. You know about it. Okay, what is saying? Find a unit vector perpendicular to each of the vector A vector plus B vector and A vector minus B vector. Okay, it's a good question to discuss. We have given A vector and B vector in the component form, and question is asking us to find the unit vector in the perpendicular direction of A vector plus B vector and A vector minus B vector. So how can we do this? What should be the path of solving this question? Read the question carefully, understand properly, and then answer the question. We should find the cross product of, yes, A plus B and A minus B. After that, we should find the unit vector of the resulting vector. Correct. So चलो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए तो समझ में आ गया कि आपने कहा कि यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन ने कहीं पर भी नहीं कहा था, बट यू गोट टू नो कि क्रॉस प्रोडक्ट करना है. तो कारण क्या है क्रॉस प्रोडक्ट करने का? क्योंकि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, और आज के सेशन की सेकंड पॉइंट यही थी. If it is required to find a vector in the perpendicular direction of given two vectors, then we should find A vector cross B vector or B vector cross A vector. So which means we should find the cross product of those two vectors for which we need perpendicular vector. So I hope you all get understand that what is the path. So the path is, first of all, find the A vector plus B vector and A vector minus B vector. Tell me what is the answer of this. Okay, now to find a vector in perpendicular direction of A vector plus B vector and A vector minus B vector, let A vector cross A vector plus B vector cross A vector minus B vector, that is equal to I cap, j cap, k cap, then 2, 3, 4 and 0, minus 1, minus 2. So if I solve it along R1, then it is equal to I cap minus 6 plus 4, that is minus 2, minus j cap, that is minus 4 minus 0, that is minus 4, and plus k cap minus 2 minus 0, that is minus 2. So the answer is what? Minus 2 I cap plus 4 j cap minus 2 k cap. But this is not a unit vector. Is it clear to you? This is not a unit vector, and question is asking us for the unit vector. How can we understand that this is not a unit vector? We can easily check the magnitude as well.
है ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा तो हम यूनिट वेक्टर कहेंगे भी नहीं, बट क्वेश्चन यूनिट वेक्टर मांगा है तो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन इसको एक नाम देते हैं सी वेक्टर। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर बिकम इक्वल टू व्हाट, सी कैप, दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी, दैट इज माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइड बाय रूट 16, no, root 24. So what is root 24? Can we solve it further? Root 24 is equals to 2 root 6. If I write down it 2 root 6, then we can solve it more. So minus I cap plus 2 j cap minus k cap upon root 6 is the required answer of this question. Okay, so this question is good on the basis of knowledge that whenever there is need to find a vector in the perpendicular direction of given vectors, we should find the cross product of those vectors. Okay, you may write down. Done. There are some important application of cross product as well. As like first one, area of triangle. If two sides of a triangle are represented by A vector and B vector, then area of triangle will be equal to half of magnitude of A vector cross B vector. Second one, area of parallelogram. If two adjacent sides of a parallelogram are represented by
A vector and B vector, then area of parallelogram will be equal to magnitude of A vector cross B vector. So by using the cross product, we can find the area of triangle and area of parallelogram. Okay, let's see some question based on this. See here. In this question, we have given 3 vertices of triangle and we need to find the area of the triangle. So as already we have seen here, to find the area of triangle, we need 2 vectors along its sides. So can you find those 2 vectors here? So we can take 2 vectors along any 2 sides. So I'm taking AB vector and BC vector. Okay, we can take any 2 sides. Okay, so AB vector will be equal to what? It is equal to OB vector minus OA vector. And if we want to find it directly, we can find it, that is 0 I cap plus j cap plus 2 k cap. Okay, now BC vector equal to, it is I cap, j cap and minus 2 k cap. So we have AB vector, we have BC vector. So area of triangle will be equal to what? Magnitude of AB vector cross BC vector, and half of it is, so that is half of I cap, j cap, k cap. Okay, and 0 1 2 and 1 1 minus 2. Okay, see here, there is need to draw another bracket here. What is the need of this? ये जो inner bracket हमने बनाया था, it is just to do the cross product of these 2 vector, है ना? और हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसके बाहर मैग्नीट्यूड का भी सैंपल है, तो इनर ब्रैकेट तो केवल क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए हुए, इसके बाहर जो ब्रैकेट बनाए गए हैं वो किसके लिए हैं? मैग्नीट्यूड के लिए। ओके, आप इस तरह से भी कर सकते हो, या आप इस स्टेप को यहाँ स्किप करते हुए पहले क्या फाइंड कर लो? ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर फाइंड कर लो, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो और फिर इसमें पुट करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लो। इट्स योर चॉइस, है ना? तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ I cap minus 2 that is minus 4 I cap. For the j cap 0 minus 2 but minus with plus 2 j cap, and then 0 minus 1 minus k cap and magnitude here. So that is equal to what? Half into root of 16 plus 4 plus 1, that is equal to root 21 upon 2 square unit, because we are finding the area, so we will write a square unit here. That's all. Okay, so keep remember, whenever there is need to find the area of a triangle,
we should find the two vectors along its sides, and then we should find the cross product of those two vectors and apply the formula. Their magnitude will be equal, but the direction will not be equal. So definitely answer will not be equal to 0. Is it done? Okay, next question is based on area of parallelogram. We know how to solve this type of question. It is saying find the area of a parallelogram whose adjacent sides are given by the vectors a vector and b vector. So we know if a vector and b vector are adjacent side of a parallelogram, then the area will be equal to magnitude of a vector cross b vector. So we should find a vector cross b vector first of all, then by finding the magnitude we will gain the area of the parallelogram. So it's not a big matter for us. Okay, so this is all about the cross product, but let's write some properties of the cross product. Hana? We should write it and write down heading properties of cross product. The first one, a vector cross b vector is not equal to b vector cross a vector. Second one, a vector cross b vector is equals to minus of b vector cross a vector. Third one, a vector cross b vector plus c vector or minus c vector, that is equal to a vector cross b vector plus minus a vector cross c vector, means it follows the distributive property as well. Okay, and k into a vector cross b vector can be written equal to ka vector cross b vector or a vector cross kb vector. Okay, these are some basic properties of cross product. So mainly from the topic of cross product, we should know the fact that
Whenever there is need to find a vector in the perpendicular direction of given vectors, we should find the cross product of those two vectors. And the second one, if cross product of two non-zero vectors is zero vector, then it means those two vectors are parallel to each other. These two main facts keep remember always. Okay, and I think if we have not written that properties of dot product as well, so we should write. I would suggest that you should write these at the space where you will get in the topic of dot product. Okay, the first one, a vector dot b vector equal to b vector dot a vector. Okay, so let's see questions of exercise. You should read these ones only, and if you find it difficult, you can ask me the hint. See here. Here we have 7 questions on the board. Read these and ask me hint if you don't understand the question.
Any problem in among first 7 questions? Third, if a unit vector A vector makes angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with j cap, and an acute angle theta with the k cap, then find theta and hence the component of A vector. So we already know that angle made by any vector, either it is a unit vector or not, those angles are called direction angles. So here pi by 4 is alpha, pi by 3 is alpha, pi by 4 is beta, and the third angle is theta here. Okay, so direction angles का ग्रुप बन गया अपने पास में pi by 3, pi by 4, theta. Now हमें थीटा फाइंड करने के लिए कहा है, तो हम थीटा ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि इससे हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस वो पैरामीटर्स है जिनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है. डायरेक्शन एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं देखा हम लोगों ने, डायरेक्शन रेशियोज के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं देखा है, रिलेशन हमने डायरेक्शन कोसाइन के बीच में देखा है. तो डायरेक्शन एंगल से डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे कॉस वैल्यू को फाइंड करते हुए, और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन के बाद में हम वो स्टैंडर्ड रिलेशन अप्लाई करेंगे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1. वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? N की वैल्यू आएगी, क्योंकि L और M की वैल्यू तो पता है, N की वैल्यू वहां से आएगी, और उस N की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे? डायरेक्शन एंगल निकालेंगे बाय कॉस इनवर्स. तो इस तरह से थीटा आ जाएगा. लेकिन आगे और पूछा है क्या? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. सो कीप रिमेंबर, ए वेक्टर जो यहां पर है वो है एक यूनिट वेक्टर, और मैंने आपको बताया है कि यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो डायरेक्शन कोसाइंस में L की वैल्यू हमारे पास है, M की वैल्यू हमारे पास है, और N की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बाय द रिलेशन. तो इन L M N का यूज करके हम ए वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये हिंट है, इस हिंट से आप ट्राई करेंगे, और फिर भी नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे कल. एनी अदर क्वेश्चन इन 7, फर्स्ट 7? नाउ 8 to 11. Among 8 to 11, I think you will have a doubt in 11th one, because here we have to find the angle between two vectors, and till now we have seen only one formula to find the angle between two vectors, that is theta equal to cos inverse A vector dot B vector upon AB. Here we have AB, but we don't have A vector dot B vector. So how will we find the angle here? So yes, and another formula is required to find the angle between two vectors when we have given the cross product of two vectors. So I will write that theta equal to sine inverse magnitude of A vector cross B vector upon AB. This will give us the value of angle theta. If we talk about कि ये बना कैसे, तो we have already seen that कि is it right? Okay, then okay, अब यहां पर प्लस माइनस लगा देंगे अपन, है ना. हम सोचते हैं कि यहां पर क्या जाना चाहिए? प्लस माइनस. बट ध्यान से सुनो, दो वेक्टर के बीच का एंगल, अगर ये एंगल सपोज करो 60 डिग्री है ना, तो
कहने वाला ये कहेगा सर अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो इसे -60 लिखो, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो इसे क्या लिखो, +60 लिखो। लेकिन जब भी हमने दो लाइन के बीच में एंगल को डिफाइन किया है तो कभी भी डायरेक्शन को नोटिस नहीं लिया, है ना। तो यहां पर इस माइनस का यहां पर कोई रोल बनता नहीं है। माइनस तभी आएगा जब हम डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और यहां अगर हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज को देखें तो कोई औचित्य नहीं है कि हमें किस वेक्टर से किस वेक्टर तक का एंगल निकालना था, हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना था। तो हम हमेशा दो लाइन के बीच में एंगल पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो दो एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, एक हो सकता है एक्यूट और एक हो सकता है ऑब्ट्यूज। क्योंकि अगर ये 60 है तो डेफिनेटली कितना आएगा, 120। तो 120 इज ऑल्सो एंगल बिटवीन टू लाइन्स। बट जब भी हमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज में से चुनना हुआ है तो हमने हमेशा प्रायोरिटी किसको दी है, एक्यूट को दी है। ठीक है, दैट्स वाई यहां पर माइनस का कोई रोल नहीं बनता, तो ओनली प्लस विल बी देयर, एंड दैट्स वाई थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी। और जिसे हम और क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके इस एक्सप्रेशन को और क्या लिख सकते हैं अपन, इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी। क्योंकि ए बी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे हम बाहर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने बाहर रख दिया उसको। अब अगर आप क्वेश्चन 11 को देखेंगे तो इस क्वेश्चन 11 में जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उससे आप इजीली क्या निकाल सकते हो, एंगल निकाल सकते हो, है ना। तो दिस इज द अनदर फॉर्मूला, यू शुड राइट इट डाउन। You can write it, if theta is the angle between two vectors, if theta is angle between two vectors a vector and b vector, then theta equal to sin inverse magnitude of a vector cross b vector upon ab। that is equal to sin inverse magnitude of a vector cross b vector upon ab। तो स्लॉट है ही नहीं ना, फिर तो स्लॉट है ही कहाँ अपने पास में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये समझ में आया। यहाँ एक पॉइंट नोटिस करवाना चाहूंगा। अब यहाँ पर आपको लगता होगा कि वी हैव टू मेथड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, either using the dot product or either using the cross product। तो whenever there is a choice कि which formula we can use, we will always give the priority to the formula based on dot product। रीजन उसका, डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल है ना, एक तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत इजी होता है कंपैरेटिवली अपन अगर देखें तो, है ना। और डॉट प्रोडक्ट में एंगल जो होता है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज भी बन के आ जाएगा और एक्यूट भी बन के आ जाएगा। समझो इस चीज को, ठीक है। जैसे समझो ये दो वेक्टर्स हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। अब एक एंगल ये वाला होगा और एक एंगल ये वाला होगा। अगर हम इससे आंसर निकालेंगे तो एंगल हमें ये वाला मिलेगा, ये कंफर्म है ना। लेकिन इफ यू लुक एट इट कि यहां पर जो डायरेक्शन चल रही है वो किस तरह से चल रही है, आप मान सकते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से डायरेक्शन इधर की तरफ चल रही है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, इस केस में एक्यूट एंगल से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल को। क्योंकि दोनों के जो हेड हैं, है ना, उनको अगर देखा जाए तो वो काफी वाइडली ओपन हो रहे हैं एक दूसरे के, है ना। तो दिस एंगल विल बी प्रायोरिटी। बट इस मेथड से तो वो आंसर नहीं आ पाएगा। इस मेथड से तो आंसर क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। तो cos थीटा वाला जो फॉर्मूला है दैट इज यूजफुल बिकॉज उससे आंसर
एक्यूट आना होगा तो एक्यूट आएगा और ऑब्ट्यूज आना होगा तो ऑब्ट्यूज आएगा। वो आपको बिल्कुल सही आंसर देगा जब कभी आपको इंडिविजुअली चूज करना हो कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। तो ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी टू द मेथड बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट whenever there is need to find the angle between two vectors. Okay, and the last question was question number 12. So I think you can solve that, है ना, वो आप solve कर लोगे, I know. So you have to complete the exercise 10.4 ये आपको complete करनी है। Sorry, parallel sides ले में पैरेलल साइड्स गिवन हो तो एरिया कैसे निकाल पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। हाउ कैन यू फाइंड द एरिया?